I hope my screen is now visible. Yes. Yes, sir. Okay. We are now starting a new unit, which is basically talks about the cost of capital. It also talks about the capital structure and the financial and operating leverages. We are talking about unit number 3 of your syllabus, unit number 3, in which we will discuss what is the cost of capital. We will discuss what are the leverages, and I will bifurcate the leverages as financial as well as operating leverages. We will also talk about the cost capital structure, and there are number of theories related to the capital structure of the company. We will see the number of theories like NI approach, NI, we will see NOI approach, and we will also see approach. As of now, we have no idea about these things, and it should not be because we did not talk about anything of these things. My first focus would be on the cost of capital. First, I will start with the cost of capital, then we will move toward the financial and operating leverage. And the last topic which we will discuss under unit number 3 is the capital structure. This is the content of unit number 3. Okay. Now, we are going to start with the cost of capital today. And if you remember the capital busting decision, because we have already done that capital busting decision, and there are the number of questions, and I've got a very good book in which questions are very good. I would like to share those questions with you all so that you people can practice a lot and can have the better understanding of the capital busting procedures or the techniques specifically. So I request the CR of the class, please give me a reminder tomorrow. I'll be I will be little committed today, and I have the different college meetings tomorrow, so I may not be able to take your classes tomorrow because we have different meetings these days, specifically for NIRF and NAC ranking. So we are supposed to go to college, and we'll have to discuss a lot of things related to the rankings. तो उसके लिए कुछ डेटा कलेक्शन है, उसके लिए चीज़ें हैं. और इस महीने बिकॉज इट सीम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हमारी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हो पाएंगी इस महीने, क्योंकि जिस तरह से मीटिंग्स आई हैं और अब कॉलेजेस वेरी ओपन स्टार्ट हो गए हैं, होना शुरू हो गए, एंड स्टिल वी हैव नो आइडिया कि आपकी क्लासेस कब से शुरू होने वाली है ऑन ऑफलाइन वे में. तो उसको लेके काफ़ी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि इस बार हमारी इस मंथ क्लासेस ज़्यादा ना हो. तो कल वाली क्लास को तो मैं काफ़ी क्लियर हूँ कि कल हमारी मीटिंग है एट 12 o'clock इन द कॉलेज, सो आई वुड नॉट बी एबल टू टेक योर क्लास टुमारो. ठीक है. तो कैपिटल बस्टिंग जो हमने बात की, इसलिए मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स शेयर करूँगा कैपिटल बस्टिंग के. आप मुझे उसका एक रिमाइंडर आपको देना है सो दैट आई कैन सेंड यू द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल, यू पीपल कैन सॉल्व देम. In case you will have any doubt, I'll take your doubts in class mode. Okay. So in capital busting, we have seen the number of things like NPV. We have seen IRR. We talked about the payback period as well. We talked about PI, profitability index. Everything, every single method was bounded with one concept. Can you name the concept? एक चीज से ही रिलेटेड थे सारे ये मेथड्स. What was that? Only one thing which makes these method different from the other methods. Any idea? Any one of you?
Time value of money. Very good. The time value of money. And for the time value of money, I hope you would agree with me that for the time value of money, we need discount rate. Yes or no? Without using the discount rate, we cannot calculate NPV. We cannot come up with the IRR. We cannot come up with payback period in the profitability index. कहने का मतलब ये है कि discount rate in the capital busting was very important concept. Discount rate. This discount rate has a different names. लास्ट क्लास में तो मैंने आपको या लास्ट यूनिट में तो मैंने आपको सिर्फ इतना कहकर खुश कर दिया कि डिस्काउंट रेट ये है. मैंने इससे ज़्यादा नहीं बताया कि what is the discount rate, how we calculate the discount rate. No, I did not tell you anything about the discount rate. Not because I don't know, because it was not the affair of the second unit. This is the part of the third unit. Discount rate is also known as hurdle rate. You can see this hurdle rate in the different books. And the discount rate can also be termed as required rate of return. Can I say this? Yes, sir. Okay. Can I say this But discount rate? Yes, bole. why is it called the required rate of return? Okay. Why it is called the required rate of return? Okay. What's your name? Saritaba. ओके रिताबा. तो हम बात कर रहे हैं रिक्वायर्ड रिटर्न की. आई होप यू हैव टेकन द अर्लियर क्लासेस रिताबा. तो इन दोज क्लासेस आई टोल्ड द क्लास the required rate of return is the minimum return we need from the project. Why we need the minimum Right. return from the project, right? See, for example, if I bought something and sorry, if I'm making something and I have to sell that thing, and in order to make those things I needed the capital. मुझे पैसा चाहिए था. पैसा मैंने इधर उधर से उठाया, यानी मेरी कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई क्लास. Yes, sir. ठीक. तो मैंने पैसा इधर उधर से उठाया. तो जब मैंने पैसा उठाया तो उसकी कुछ कॉस्ट आई होगी. तो if the cost is, let's say it is 10%, it means what I'm expecting from the project, I'm expecting at least 10% from the project. Yes or no? Yes, sir. Right? That is why it is known as the required rate of return. It is the minimum required rate of return we must earn from a project. Therefore, this capital budgeting एक सेकेंड क्या हो रही है. Where is my cursor? Yes. This required rate of return is also known as cost of capital. Yes, it is also known as cost of capital. यानी चीज एक ही, उसके नाम अलग अलग है. Am I clear? This is the cost of capital. And if my cost of capital is 10%, it means that I need at least 10% return from the project. That's why it is a required rate of return. This is also called as hurdle rate. It is a hurdle that you really have to tackle this hurdle, and we always strive to earn more than that. Discounting rate. Why it is called as the discounting rate? Because this is the rate at which we have to discount our money. क्योंकि इस रेट पर आप पैसा ले रहे हैं, और अगर आपको एक साल के बाद ये रिटर्न मिलता है तो आपको ये जानना है कि जिस रेट पर आपकी कॉस्ट आई है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है. तो वी नीड द डिस्काउंट रेट. आई होप वी ऑल आर वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स, दीज टर्मिनोलॉजीज, राइट? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. राइट. चीज एक है, उसके नाम अलग अलग हैं, कॉन्सेप्ट एक है. यानी कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर आप बताने क्या वाले, आप ऑलरेडी बता चुके हैं डिस्काउंट रेट. अब आपने नाम अलग अलग बता दिए, यानी कि अगर हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया होगा तो हम समझ जाएंगे इट इज़ अ डिस्काउंट रेट. हर्डल रेट दिया होगा, we can easily understand it is a discount rate. If the required rate of return is given, we can understand it's a discount rate. But what is the point to discuss this in a different or separate chapter? The point is, we mainly talked about this K. What is K? What is K?
K is also डिस्काउंट रेट. K यानी डिस्काउंट रेट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं K equals to 15% भी लिख सकता हूँ. It simply means everything whatever I have written here. It is also meant the discount rate, hurdle rate required to return the cost of capital. Now the question is, if I in last unit if I wrote it down K 20%, मैंने आपको ये नहीं बताया था कि 20% आया कैसे होगा. Did I tell you that? No, sir. No. वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये थर्ड यूनिट में बताना होता है. It means now I'm going to tell you how this 20% has come up as a discount rate, the cost of capital. It means we are interested to know the cost of capital. कैसे कैलकुलेट की जाती है इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कैसे किया जाता है. So basically, when we talk about the cost of capital, remember it is the financing activity. Yes or no? Yes, sir. Capital vesting was investing activity, part of the investing activity or the investing decision of the company. Yes. But when we start this cost of capital discussion, it is the part of the financing decision of the company. And this is investing decision of the company. क्योंकि कैपिटल बस्टिंग हमें ये बताते हैं हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूनिट इट टेल्स अस हम कहाँ कहाँ से पैसा उठाएंगे, विच इज द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी, so that the cost of capital should come as minimum possible. Yes or no? यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पर. Yes, sir. Cost of capital should come as minimum as possible. This is our foremost important objective, the cost of capital. Now, in order to know the cost of capital, अब आपको ये भी तो जानना है कि what can be the different sources, what can be the different sources of financing. क्योंकि जब आपको यही पता नहीं है कि डिफरेंट फाइनेंसिंग के सोर्स क्या हैं, तो आप उनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे. यस और नो? द मेन फाइनेंसिंग सोर्स आर डेट एंड इक्विटी. कैन वी से दिस? डेट एंड इक्विटी. Yes, sir. डेट एंड इक्विटी. या तो आप इक्विटी से पैसा उठाएंगे या डेट से उठाएंगे, और उनकी जो भी कॉस्ट आएगी उसको आप कंबाइन करके बोल देंगे सर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, विच इज ऑल्सो नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बैक वो आगे की बात है. Debt. Now, if I bifurcate this debt category, we may have the number of debts options. We have the bonds, we have debentures, we have long-term loans from the banks, from the institutions, from the banks, for example, the debts. In case of equity, we may have preferential equity. We can also have what? शेयर में इक्विटी आएगा ना, ट्रू इक्विटी. थोड़ा गलत लिख दिया, इट्स इक्विटी, ट्रू इक्विटी. Right? Now, every financing source has its own cost. Bonds will have its own cost. Debenture cost, it will cost you. Loans from the banks, it will have some cost. Equity, preference shares cost भी होगा, और ट्रू इक्विटी है उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी. कहने का मतलब क्या है? It simply means if I really want to know the cost of capital, I really will have to look into the cost of bonds, cost of debenture, cost the loans from the banks, cost of preference equity capital, cost of equity capital. Yes or no? Yes. Yes, sir. मैं ये सब जान पाऊंगा तो मैं ये भी जान पाऊंगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, और मैं अगर ये जान पाऊँ मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इसका मतलब मैं डिस्काउंटिंग रेट जान रहा हूँ. So that is why this cost of capital is very very important chapter. Although it has a lot of mathematical calculation and I believe that we can do those mathematical calculation easily. तो आगे आज इस क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, although ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्लासेस हमें लगने वाली है, शायद ये पूरा मंथ लग जाएगा इस यूनिट को कंप्लीट करने में. आई सेड यूनिट को कंप्लीट करने में.
एंड द गिवन सिचुएशन, जैसे मैंने बताया क्लासेस कम होंगी इस मंथ में, तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी लग सकता है टू कंप्लीट दिस यूनिट. But need not worry, thereafter we'll have only two units, unit number 4 and unit number 5. They are relatively easier unit in comparison to unit number 3. यूनिट नंबर 3 को ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट माना जाता है. मानने का रीज़न भी है, काफ़ी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं, काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक में से कंसीडर किया जाता है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बट डोंट वरी, इफ आई एम टीचिंग यू आई मेक श्योर कि आपको कुछ डिफिकल्ट ना लगे. So I request you all to take the classes regularly so that you people can understand easily this concept of the cost of capital first. Then we will move to the financing and the operating leverage. ये वाला सेकंड चैप्टर फाइनेंशिंग एंड ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है, एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी ऐड करता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल केसेस भी ऐड करता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा. वंस वी आर डन विद दीज टू मेथड वी कैन इजीली कम अप विद द थर्ड चैप्टर. वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो आई होप आपको समझ आया होगा हम यूनिट नंबर 3 में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं. यस, Yes, sir. ओके फाइन. नाउ इन ऑर्डर टू डिसाइड दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो हमें समझ आया. But what are the different factors which can affect this cost of capital? The cost of capital may higher or lesser. If your capital cost of capital is 15% in the industry and the other company in the same industry has 18% cost of capital, what can be the different factors which is affecting this 3% cost of capital rate? It simply means I'm talking about the different factors which may lower or they may push higher this cost of capital. Are you getting my point? मैं क्या बता रहा हूँ? Yes? Yes, sir. Okay, fine. तो अब हम उसी की बात करने वाले हैं. What are the factors? अच्छा, if you need the screenshot, Done. okay. Factors affect required rate of return, or we can say the factors affect cost of capital. Both are same thing. यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं. द वेरी फर्स्ट फैक्टर, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना कितना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इन अ वेरी लेमन वे, if I'm earning, I am earning, if I'm earning for example, and if someone asks ki, what is your saving, I have said my saving is this much on a monthly basis. If someone asks how much, what is the return, what is the return you are expecting from your savings, what should be my answer? My answer should be at least, yes or no, my answer should be at least also, always. Sorry, my answer should be always at least कि इतना तो मिलना चाहिए. Yes or no? Yes, sir. Right. And how would I decide that इतना तो मिलना चाहिए? Whenever we say ना कि इतना तो मिलना चाहिए, we always looked upon the safest investment option, which will give us minimum possible safest return. So what I can do, I can say I can look at my bank account, I can look at the treasury bills, I can look at the government securities, and one of the safest one is bank account. For example, if my bank is giving me 4.5% interest, I know without any difficulties, without any risk, I can get at least 4.5% interest. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मेरे सामने होगा तो मैं उस 4.5% से ही तो जज करूंगा कि मुझे 4.5% से ज़्यादा कितना मिल रहा है. अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है जिसमें मुझे 4.5% नहीं मिल रहा,
why should I undertake that investment option? I will outrightly reject that investment option. The reason is very clear, because I'm getting at least this return, which is the risk free return. Are you getting my point, Klaus? What I'm trying to convey? Yes. कि मुझे इतना तो बिना रिस्क के मिल रहा है भाई. तो कहने का मतलब है कि जब भी हम अपने रिटर्न्स की बात करते हैं तो वी ऑलवेज लुक अपॉन कि इतना मुझे मिल रहा है बिना किसी रिस्क के. और अगर मैं अपनी पैसे को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल दूं और मुझे उतना ही मिले, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिले, तो क्या फ़ायदा है वैसे ऐसे रिटर्न का. तो कुछ इस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं. तो इन अ सेम केस, when we talk about the cost of capital, the company which is going to undertake a project, the company which is going to take money from the market, पैसा उठा रही है, तो उस कंपनी के लिए भी जानना जरूरी है कि उस पैसे को अगर वो कितना इंटरेस्ट या कितना उस पैसे से कंपनी को रिस्क फ्री रिटर्न मिल सकता है. तो कहने का मतलब क्या है, द वेरी फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिस्क फ्री रिटर्न. यस क्लास? Yes. मैंने कुछ अलग चीज तो नहीं बताई ना, आपको समझ आ रहा होगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से हियर, राइट? तो मैंने बताया कि रिस्क फ्री रिटर्न, अगर आप अपनी फैमिली में पूछेंगे कि क्या सेम बैंक अकाउंट्स में पैसा क्यों डालते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे से कि भाई इसमें से आपको रिटर्न जो मिल रहा है अश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है. टी बिल्स की अगर बात करें, ट्रेजरी बिल्स की बात करें, द ट्रेजरी बिल विच आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू आरबीआई, तो उस केस में भाई इतना तो मिलेगा कम से कम. तो ये जो इतना मिलेगा कम से कम, वो आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हमेशा अफेक्ट करेगा. आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कभी भी रिस्क फ्री रिटर्न से कम नहीं हो सकता, राइट? मान लीजिए आपका रिस्क फ्री रिटर्न है 5% और आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 3%, तो उसका मतलब आप उस प्रोजेक्ट से 3% रिटर्न ही अर्न करेंगे या उससे ज्यादा. यस और नो? यस और नो? Yes. हाँ. Yes, sir. तो risk free return always suggests us the idea this is the minimum possible we can get without taking any risk. Risk free returns. इसके लिए क्या सिक्योरिटीज देखी जाती है? मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखी जाती है. इसके लिए आप बैंक्स अकाउंट की भी बात कर सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट्स की, अप टू अ लिमिट. बैंक्स, सेविंग बैंक्स. Right. So this is the very first factor which affect your required return on cost of capital. Now the second one is business risk premium. Now the business risk premium. मैं खाली बैठा हूँ और मुझे खाली बैठने पे 5% रिटर्न तो मिलता ही मिलता है. इसका मतलब आई कैन डिपॉजिट माई मनी in the bank account, or I can invest my money in the government securities which assure me 100% return. Yes, सॉवरिन बैंकरप्सी होना अलग केस है. बहुत कम कंट्रीज में अभी तक हुआ है, लाइक अर्जेंटीना हैज फेस्ड अ सॉवरिन बैंकरप्सी. There are number very a few countries like Zimbabwe, it has also faced a sovereign bankruptcy. लेकिन there are the very less instances where the sovereign bankruptcy has committed. I hope sovereign bankruptcy आपको समझ आ रहा हो. sovereign failures. Yes. sovereign का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जब पूरी कंट्री, उस देश की सरकार अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, उसे कहते हैं सॉवरेन बैंकरप्सी. ठीक है, तो इट्स वेरी रेयर. ग्रीस के केस में हुआ था इन 2015. It was a sovereign bankruptcy. They were about to. They were about to, but the European Union they funded and they saved the Greece from that turmoil. ठीक है, I don't know how many of you know it. 2015 में तो आप शायद बहुत ही छोटे होंगे, लाइक 11 9th या 10th में होंगे, आई एम नॉट श्योर. तो लाइक बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आगे अच्छी स्टडी करनी है फाइनेंस में. यू मस्ट नो द कंट्रीज फाइनेंशियल क्राइसिस. तो वहाँ पे ये चीज़, तो मान लेते हैं कि 10%.
सॉरी, आई एम एक्सपेक्टिंग 5% रिटर्न, कि मैं कुछ भी ना करूँ ना तो 5% रिटर्न तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन बच्चे ये बताइए, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर दें तो क्या फिर भी आप 5% ही एक्सपेक्ट करेंगे? No, sir. नो। आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे? आप बिजनेस चलाने की कॉस्ट का रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेंगे, यानी आप कुछ प्रीमियम, यू आर आस्किंग सम प्रीमियम, आस्किंग अ प्रीमियम, राइट? तो बिजनेस रिस्क प्रीमियम इज अ सच अ प्रीमियम, बिकॉज यू मे आस्क कि सर मैंने बिल्डिंग ले ली, उसका रेंट जा रहा है, मशीन्स का रेंट जा रहा है, जो परमानेंट एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी जा रही है, बट मेरा काम बंद है। तो सर आप ये बताइए कि मेरी तो कॉस्ट आ रही है ना, तो यानी कि उस बिजनेस को कंटिन्यू रखने में देयर आर सम कॉस्ट which are not variable cost but they are fixed cost. Yes or no? Yes or Yes, no? sir. Yes, See, sir. variable costs are never the risk, कि वेरिएबल कॉस्ट तो बिजनेस बंद कर दो तो नहीं आएंगी, लेकिन द फिक्स कॉस्ट दे आर ऑलवेज द रिस्क, बिकॉज it happens like if you have seen in last 1.5 year what we have seen, there's a number of business they were shut down for a longer time period, but they had their fixed infrastructure and they had to spend a lot of money in order to maintain those infrastructure. They had taken the land on lease, they had taken the place on lease, they were the number of property which were rented out. तो कहने का मतलब है वो कॉस्ट तो उनकी फिर भी आ रही थी, तो यानी कि बिजनेस को चलाए रखने के लिए देर इज ऑलवेज अ कॉस्ट विच इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो बिजनेस प्रीमियम, बिजनेस रिस्क प्रीमियम इज समथिंग व्हाट, कि आप एटलीस्ट इतना तो मांगेंगे कि भाई मैं बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है मैं बिजनेस बंद भी कर दूं, मेरी बिजनेस टेम्परेली बंद कर दूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, बट वट ओवर द फिक्स कॉस्ट वो तो आएगी। मकान मालिक किराया लेने आ जाएगा, देना पड़ेगा, सामान रखा हुआ है, मेरा मेरा ताला लगा हुआ है, परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्हें निकाल नहीं सकता, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। तो आई होप बिजनेस प्रीमियम इज क्लियर। It is a risk, I'm writing down here, it is the risk of not being, it is a risk of not being able to meet, not risk of not being able to meet its fixed operating cost, FOC, fixed operating cost. Clear है सबको? Business risk premium यानी वो रिस्क, वो सिचुएशन जिसमें आप फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी बियर नहीं कर पा रहे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो आप इसका प्रीमियम मांग रहे हैं, आप इस चीज का प्रीमियम मांग रहे हैं, आप हमेशा अपने रिटर्न में उस पॉसिबिलिटी को भी ऐड करेंगे कि 5% तो मिल रहा था, ठीक है, but I'm adding 3% for business's premium because I need at least this 3%, right? So this is something the business risk premium. Now the last one, financial risk premium, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम, आप बोलेंगे सर ठीक है मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैंने बाहर से पैसा उठा लिया, तो जिसने पैसा उठाया मेरा बिजनेस चले या ना चले, इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, इफ आई टॉक अबाउट द डेट, उन्हें तो मुझे देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट, मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये भी एक रिस्क है कि मेरा बिजनेस चले या ना चले उसकी भी मुझे कॉस्ट बियर करनी है, विच इज द इंटरेस्ट कॉस्ट स्पेसिफिकली। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी मेरा एक कॉस्ट है, तो इसका भी मैं एक एटलीस्ट एक प्रीमियम एक्सपेक्ट करूंगा। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई विल एक्सपेक्ट रिस्क फ्री रिटर्न, तो ये तो मिलना ही मिलना चाहिए। बिजनेस रिस्क प्रीमियम इट शुड बी देयर बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट exposure. Financial risk premium should be awarded because I have taken the money and there are certain expenditures which are fixed financial cost. अब वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट तो हर हालत में होगी, आपने बिजनेस चलाया है नहीं चलाया किसी को कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, आईओसी इंश्योरेंस आईबीसी में आपके अगेंस्ट केस फाइल हो जाएगा, इंश्योरेंस इन बैंकरप्सी कोर्ट में, राइट? आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग द फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम इज अ कंडीशन और इट इज रिस्क ऑफ risk
of not meeting fixed financial cost by the company. Risk of not meeting fixed financial cost by the company. Obviously आप इसका भी प्रीमियम चार्ज करना चाहेंगे, ठीक है? So these are the 3 points. Next one is a specific, project specific, which is liquidity risk premium, which is liquidity liquidity risk premium. What does it mean by this liquidity risk premium? For example, you have undertaken a project, आपने प्रोजेक्ट लिया, अब आपका प्रोजेक्ट अगर वो चल नहीं पा रहा तो ऑब्वियसली यू हैव टू लिक्विडेट दैट प्रोजेक्ट, यस और नो? आपको लिक्विडेट करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू सेल आउट दैट प्रोजेक्ट सो यू कैन गेट वट एवर मनी यू कैन रिकवर फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, यस और नो क्लास? Yes. So if the liquidity is very high, if the project liquidity is very high, obviously आप उसे इजीली मार्केट में सेल ऑफ कर पाएंगे, इजीली मार्केट में उसे आप कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, दैट इज द लिक्विडिटी, ठीक है? सो इन सच अ केस लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम वुड बी लेसर, LRP would be lesser, liquidity risk premium. But in a case if the project is highly illiquid, ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो हाईली illiquid है, तो in such a case liquidity risk premium would be very high, क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा है इसलिए आपका liquidity risk premium would be higher. Yes or no? Everyone? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, तो ये हमें समझने की जरूरत है when we talk about this liquidity risk premium. It is higher in case if it is higher, then LRP is lesser. In case if it is lesser, LRP would be higher. So all I can say, these factors affect the cost of capital. It means all I can say, if I have to solve it like a numerical, all I can say the cost of capital equals to कम से कम रिटर्न तो चाहिए विच इज RF, रिस्क फ्री रिटर्न, ये तो चाहिए चाहिए रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बिजनेस रिस्क प्रीमियम, बिजनेस रिस्क प्रीमियम plus financial risk premium FRP and plus LRP. So this is something the cost of capital. Yes, class? Yes, sir. Okay. So what we get to know till now, we get to know cost of capital होती क्या है, why it is used, and what is the importance of this cost of capital. No, we haven't seen the importance of the cost of capital, but we, as of now we have got a little clarity over and how we can infer the cost of capital, how we can come up with the cost of capital. ठीक, ये तो हमें समझ है. Now the next thing is the importance. Why this cost of capital is very important. We all know why it is important. Because if we know the cost of capital, we can evaluate our projects, whether the project is able to provide at least return or not. Yes or no? यही तो मतलब है cost of capital देखने का. Yes. Okay? तो अब देखिए cost of capital से ये शब्द निकलता है जिसे कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैंने बताया, इट इज द थर्ड चैप्टर, इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर थर्ड यूनिट. एनी आइडिया व्हाट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर? Debt to equity ratio in capital is known as capital structure. Very good, very good. Capital structure is something the mix of debt and equity in companies financing decision or in companies liability side. Can we say that? The liability side of the company, what is the composition of debt and equity? This capital structure has a direct bearing on cost of capital. Or I can say the cost of capital is directly affected by the capital structure decision. Yes or no, class? क्यों ऐसा क्यों? आपको शायद समझ नहीं आया. कॉस्ट ऑफ कैपिटल
is something, what is the cost of the product, cost of your decision, right? Cost of your capital. बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे डिसाइड होती है? बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. मान लेते हैं केस में देयर आर टू ऑप्शंस. एक केस में डेट मनी इज 40% and equity is 60%. In second case, debt money is 10% and equity is 90%. Now look at this case. In दोनों cases में, since the capital structure, the composition of debt and equity, in both cases, the debt and equities are different, the compositions are different, it will have the direct effect over this VAT, which is nothing but the cost of capital. Weighted average cost of capital कहा जाता है इसे. तो इस केस में कुछ अलग आएगी, इस केस में कुछ अलग आएगी. समझ आया क्लास? यस Yes. राइट. हो सकता है फर्स्ट केस में आए 10%, हो सकता है, और सेकंड केस में आए 17%. बहुत पॉसिबल है. अब आप इसके पीछे रीजंस भी देख सकते हैं कि क्या ऐसा है, क्यों ऐसा है, तो ये अलग चीज़ है, ये हम आगे बात करेंगे. बट all we can say, the cost of capital and the capital structure, they are related. Because most of the time in many interviews, I know this from my experience, even in DU also, they ask the difference between the cost of capital and capital structure. They are not different. They are the same thing of the same coin. They are the different aspect of the same coin. Because of the cost of capital, because of the capital structure, the cost of capital is decided. जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया. ठीक है? यस क्लास? Yes, sir. ओके गुड. तो ये हमने आज समझा अच्छे से. आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Shall I remove it? Yes, sir. अच्छा, आपने से कितने स्टूडेंट्स ने बुक बाय कर ली है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बॉट द बुक्स? ओके, कोई आशीजा. What about other students? Rachna, Ritava. Applied what wrote, Sorry Ritava, बोले. sir, I'm sorry for your question. आई एम सेइंग कि आप लोगों ने बुक बाय कर ली है, नहीं की है तो क्यों नहीं की है अभी तक? Sir, कर ली. अच्छा, कर ली है. विच बुक, विच आई मीन ऑफ विच ऑथर? Taxman, sir. टेक्समैन बाय. Sir, I'm not sure, but आपने जो एडवांस वाली बताई थी ना, अच्छा, आपने एडवांस वाली ली है बाय. आरती रस्तोगी. ओके, सो इफ़ यू हैव बॉट द एडवांस लेवल बुक विदाबा, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि हमारे सिलेबस में क्या है और बुक में क्या है. ठीक है? बिकॉज यू Yes, माइट sir. कंफ्यूज सम टाइम, बिकॉज पीओडी के साथ भी कुछ यही केस हुआ था. राइट पीओडी? तो थोड़ा सा आप याद Yes. रखिए इस चीज़ को कि हमें क्लास, बिकॉज इट्स अ बीकॉम प्रोग्राम सिलेबस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट द वेरी बेसिक्स. ठीक है? एडवांस लेवल आपने बहुत अच्छा किया बाय की, बिकॉज इफ़ यू हैव बॉट इट दिस बुक, ये आपके मास्टर्स में भी काम आएगी और आपके मास्टर से आगे भी काम आ सकती है. ठीक है? दिस इज Right. द वंडरफुल. ठीक है? तो बट इस बुक को आप रेफरेंस पॉइंट लेकर पूरी तरह से आप अपने बीकॉम प्रोग्राम की तैयारी मत कीजिएगा. ठीक है? Okay. हाँ. ओके. तो आशीषा, आपने कौन सी बुक बाय की है? सर आरती रस्तोगी. ओके, एडवांस और बेसिक? सर ये नहीं पता, शायद एडवांस्ड ही है. अच्छा, ये नहीं पता? कैसे नहीं पता? ये तो पता होना चाहिए. सर बीकॉम ऑनर्स की है. अच्छा, बीकॉम ऑनर्स से तो इट मस्ट हैव इन द बेसिक बुक ओनली. ठीक है? कोई बात नहीं. ओके, तो आई होप 3 ही स्टूडेंट्स ने बुक बाय किया. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल, प्लीज़ बाय दिस बुक. बिकॉज अब आगे आपका डिस्कशन और भी ज़्यादा न्यूमेरिकली होने वाला है. तो यू पीपल रियली हैव टू सॉल्व द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड यू फॉर दिस यू रियली नीड द बुक. मैं आपको हर बार नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा. कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग अपने लेवल पर अपने टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है? आगे हम चलते हैं.
बट हाँ जो आपकी एडवांस लेवल आर प्लस होगी उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं दिए गए हैं. इट हैज़ मोर एंड मोर थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स. Okay. Yes. Factors. The importance. What is the importance of this cost of capital? See, the very first importance is. अच्छा आप लोग खुद कोशिश कीजिए एक बार आंसर करने की. What is the benefit of this cost of capital? It helps us determine the minimum return that we expect. Yes. So we basically can determine minimum. We can determine minimum required rate of return. And what does it help? This minimum required rate of return helps us to determine or to evaluate the projects. Yes or no? Evaluations. And how we can evaluate the projects. We have already done the evaluations of the projects. Capital investing में वही तो हमने किया है ना कि अगर for example, for instance, if NPV, it means the present value of inflows अगर ज़्यादा थी present value of outflow से इसका मतलब वो that particular project was earning higher than the required rate of return. यही तो मतलब था required of return कम था और एक्चुअल रिटर्न रेट ज़्यादा था. Yes or no class? तभी तो आपका एनपीवी पॉजिटिव आया था. समझ Yes. आ रहा है? ठीक है. नेक्स्ट इसके साथ हमने एक और इवैल्यूएशन टेक्निक देखी थी विच इज आईआर. देखिए मैं दो ही मेन आगे भी हमेशा दो ही बात करूंगा कि दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. IRR and IRR is directly associated with cost of capital. कैसे था वो रिलेटेड? If the cost of capital is lesser, IRR is higher. IRR is for example 14% and cost of capital is just 10%. इसका मतलब कि 10% is the minimum required rate of return और उस प्रोजेक्ट का IRR यानी एट 14% NPV becomes zero. इसका मतलब 14% पे आप हमेशा NPV आपका पॉजिटिव रहेगा. यस और नो? यही तो इन्फ्लुएंस था. यस और नो? आई डोंट नो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं. Am I connected or we are lost the connection? We are connected. Okay. ठीक है. तो IRR in case if IRR is lesser than cost of capital 10% पे ही आपका जीरो हो जाता है तो 14% में तो ऑब्वियसली आपका एनपीवी नेगेटिव ही होगा. यस और नो? एनपीवी विल श्योरली बी नेगेटिव इन केस ऑफ 14% of cost of capital. It simply means this cost of capital gives us the focal point to evaluate the project. With the help of this, we can easily evaluate the different projects. This is the one thing. And the second thing is it helps to decide the cost structure, capital structure of the company. For example, very simple example, मान लेते हैं A limited है and A limited WAC, which is the cost of capital, weighted average cost of capital is 10%. And it is 10%, it is 10% when equity is 90% and debt
is 10%. Now, if company feels that 10% is, हाँ जी, yes, yes, बोलिए. I think it is from my next another class. अच्छा हाँ, आपको भी आवाज आई थी क्या? Yes, sir. ओके, हाँ तो वो मेरी सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स हैं विच इज अबाउट टू स्टार्ट. कहाँ पे था ये? ओके, नाउ सी, मान लेते हैं कि उस कंपनी का ए लिमिटेड का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाज 10%, राइट, एंड द इंडस्ट्रियल एवरेज इज 7%. So this means the company is very expensive. The company's cost of capital is quite expensive. It can be understand because इस company के case में 90% equity composition है, and its cost structure is very heavily occupied by the equity capital. Whereas the debt is only 10%. As I already told you, the debt always provide tax shields. So normally, in a normal cases, if other things remain same, जैसे जैसे डेट्स इंक्रीज होता है किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर्स में उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आती है. ठीक है, तो इस केस में बिकॉज इफ कंपनी इज लुकिंग एट दिस स्ट्रक्चर एंड दिस, what they can do, they can come up with different composition. So what they can do, they can reduce the equity capital, they can buy back their shares. Now they may have 70% equity in their composition and 30% debt. Why they have done so? In order to bring down their cost of capital. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना कॉम्पोजिशन चेंज कर लिया. तो बेसिकली this idea of the cost structure and the capital cost structure and the cost of capital, it helps the company to decide the optimum capital structure. Optimum. Why the optimum? Because optimum capital structure is always required where the weighted average cost of capital is least in the industry. Yes, class? समझ आया? Yes. ओके, तो हम यही बात करेंगे आगे वाले केसेस में भी, यही बात करेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा. मान लेते हैं कि डेट इतना है, इक्विटी इतना है, इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल ले. फिर मैं अलग केस दूंगा जिसमें कहूँगा कि डेट बढ़ गया है, इक्विटी कम हो गई है. नाउ व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सो वी विल अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड WACC. ठीक है, इस क्लास Okay, sir. Yes. आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी, बिकॉज आप लोगों के आंसर्स तो इतने नहीं आते हैं, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि किसको समझ आया किसको नहीं आया. I submit. ओके, गुड. रचना, मनीष, यस सर, कल आ गया हाँ थोड़ा बोलो. थोड़ा. अच्छे से आ गया? ओके, Yes. नहीं सर, एक बार फिर से करना पड़ेगा. अच्छा क्या नहीं आया बताओ, आपने पूछा भी नहीं आपने.